Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In our video solution series, Road to XLRI, today we are going to pick up XAT 2020 first RC passage. Okay, I hope that you have gone through the other video solutions of XAT previous year questions. And without any delay, let's dive in, see what this passage is about. As usual, I recommend that you start your own timer in parallel, read the passage, use the timestamp that I've put in the description box, and then come back to this point to check whether the answers are correct or have you gone wrong anywhere. Okay. So chalo, let's begin. Starting with the narration in the passage and then we'll go to the question now. Okay. So passage बहुत fun read लगा मुझे. One thing that is a bit off is कि एक single paragraph है पूरा का पूरा. ठीक है. तो रीडिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बट इट्स ओके. विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन. शुरुआत ही एकदम बढ़िया स्टेटमेंट के साथ में की है पैसेज ऑथर ने. और एक चीज मुझे मुझे बहुत पसंद नहीं अबाउट पैसेजेस लाइक दिस इज thankfully these passages are a complete read in themselves. It's not like यार इनका head and tail किसी ने गायब कर दिया. You read the passage and you're able to get the hang of the entire narration that is going on. Such RC passages are my favorite, but occasionally ऐसा होता है that कोई भी ओरिजिनल सोर्स में से बीच में से पार्ट कोई उठाकर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है. That happens in CAT as well as in SAT. So those passages can be a bit tricky to read. Anyway, thankfully that has not happened here. Let's see what the author is trying to say. कि भाई पॉइंटलेस जॉब्स कोई बाहर बैठकर बना रहा है क्या? हाउ इज दिस हैपनिंग? कैपिटलिज्म जो हमने इन्वेंट किया, इट वाज सपोज्ड टू पुट अ स्टॉप टू ऑल दिस. ठीक है कि इन कैपिटलिज्म दिस इज प्रिसाइजली व्हाट वाज सपोज नॉट टू हैपन. आप सोशलिज्म लो, कम्युनिज्म लो, इनएफिशिएंट स्टाइल का लाइक सोवियत यूनियन, वहां तो समझता है कि अरे तो सिस्टम ही थोड़ा लेम था, वहां पे जबरदस्ती जॉब्स क्रिएट किए जाते थे सो दैट पीपल हैव समथिंग टू डू. ओके, लेकिन capitalism stands for the exact opposite. The concept of free market competition, the market efficiency, यही था कि companies will operate with such high efficiency कि there should be no redundant, there should be no pointless jobs. ठीक है. The last thing any company is going to do is shell out money to workers they don't need at all. लेकिन ये तो फिर भी हो रहा है. और जादू है भाई, क्या जादू है? इट्स लाइक एडिंग सॉल्ट टू इंजुरी, एडिंग इंसल्ट टू इंजुरी. क्या हो रहा है कि जब भी माहौल खराब होता है, जब भी इकोनॉमी डाउन जाती है, whenever downsizing happens, whenever layoffs happen, so what would you expect? टेक्निकली यू वुड थिंक यार जो यूजलेस जॉब्स है, पॉइंटलेस रिडंडेंट रोल्स है, उनको उड़ाया जाए. नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता है. आयरनिकली व्हाट इज हैपनिंग that the people are actually contributing to the organization, they get kicked out. And adding to the injury even more, adding more and more, piling up on the misery. कि जो पेपर पुशर्स जॉब्स है, यूजलेस जॉब्स जो है, इनका तो यार संख्या बढ़ती जा रही है. बेसिकली यूजलेस बैठे रहने के लिए, कोई मीनिंगफुल काम न करने के इनको पैसे दिए जा रहे हैं. दीज जॉब्स अल्टीमेटली सीम टू एक्सपांड एंड मोर एम्प्लॉयज फाइंड देमसेल्व्स इन सिचुएशंस लाइक दिस. तो ये हो कैसे रहा है? क्या हो गया ऐसा? तो ऑथर इज सेइंग दैट इसका कोई रीजन हम दे नहीं सकते. दिस इज फॉर द ऑथर some strange alchemy that is going on. Okay, alchemy is actually a pretty much practically a dead field. एक particular point of time था history में when chemists, scientists, researchers, a major group of people used to believe कि कोई particular chemical processes करके you could transform objects into pure gold. ठीक है. तो इसी के अराउंड कहीं ना कहीं पॉलो कोएलो की बुक भी बहुत फेमस है, द अल्केमिस्ट एंड ऑल. आई रीड इट वे बैक, आई थिंक आज से 15-17 साल पहले. भूल भी गया मैं तो किताब क्या है वो चीज, बट a lot of CAD institutes give that as a first reading exercise to the enrolled students. I don't know why they do that. Anyway, coming to the narrative back again, कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये कुछ तो जादू हो रहा है भाई कि efficient लोग get kicked out whenever things go bad and idiots, people who are not contributing one bit to the organization, they are going up. ठीक है. तो इससे हो क्या रहा है? Eventually we have now arrived at a situation, even though in a capitalistic society the roles, the kind of job description people have bears a stark resemblance to the Soviet style of working. And what was that people have a mandate कि आपको एक हफ्ते में 40 से 50 घंटा काम करना है. ओके, ठीक है. लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए होता है. ऑथर सेज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज people are effectively working only for 15 hours, just like Keynes projected, just like Keynes predicted. Keynes is a very famous Western economist. Okay, इनके अराउंड एक एक्चुअली बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स भी डेवलप हो चुका है. ठीक है. तो
कर क्या रहे हैं फिर लोग? 15 घंटे काम कर रहे हैं, तो व्हाट आर दे डूइंग फॉर द रिमेनिंग 30-35 आवर्स? दे आर डूइंग टाइम पास। ठीक है, मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करेंगे, फेसबुक पे टाइम पास करेंगे, इन टुडेज टाइम यू कैन से इंस्टाग्राम, या फिर टीवी सीरीज का कुछ बिंज वॉचिंग चल रहा है। ओके, ऑथर सीज ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब मुझे चाहिए। तो इसका जवाब डेफिनेटली इकोनॉमिक्स तो नहीं दे सकता यार, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी हमने बिल्ड की है तो यही कहती है कि इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी efficiency रहेगी, people will have 100% productive jobs, there is almost practically no room for wastage. So author says for the author the answer lies in the answer has a angle of morality and political motives. ठीक है, so he now shifts gears and is now trying to talk about political ruling class. What does he say about them? He says कि देखो, रूलिंग क्लास अच्छे तरीके से जानती है कि अगर जनता खुश है और प्रोडक्टिव है, ठीक है, गुड, एक्चुअली आइडियल थिंग है ना, जनता खुश भी चाहिए, जनता प्रोडक्टिव भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी जनता के हाथ में फ्री टाइम आ गया तो ये बड़ी खतरनाक बात है, दिस इज अ मॉर्टल डेंजर टू द रूलिंग क्लास। ओके, और यहाँ पर एक हिंट भी दी है, ऑथर इज ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड इन द 60s। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट नॉलेजेबल व्हिच इवेंट इज दिस गाय रेफरिंग। Is he talking about 60s of America या फिर 60s in the UK or Europe? I don't know. Unfortunately, I'm not that knowledgeable. तो चलो ठीक है, फिर भी this is a bracketed sentence, so we can afford to take it a bit lightly. What is he saying is कि governments ruling class जानते हैं, जनता खुश है, जनता प्रोडक्टिव है, और जनता के हाथ में फ्री टाइम है, तो ये डिजास्टर की रेसिपी है। My guesswork, now I am indulging in speculation here, I think the author is saying this कि अगर जनता खुश है और उसके पास खाली टाइम है, तो people then will start applying their brains to almost everything. तो सरकार अगर कुछ शेडी काम करना चाहती है जिससे फिर जनता शायद खुश ना हो, तो जनता will start revolting, they will start providing criticism, उठापटक मच सकती है सोसाइटी में। तो मे बी एज अ वे टू बाईपास ऑल दिस, governments find themselves very close to a very solid weapon. And what is that weapon? Very convenient one actually at that. And what is it? Let's take a look. It is this कि काम को ना, work is sold as a moral value in itself, not a privilege, it is sold as a duty to the society। और एक नैरेटिव पेडल किया जा रहा है कि भाई देखो, अगर तुम तुम्हारे मैक्सिमम वेकिंग आवर्स में इंटेंसली बिजी नहीं हो, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो सोसाइटी के लिए जो तुमने बिजी रहकर करना चाहिए, यू डिजर्व नथिंग। ओके, गेट आउट, you don't deserve anything. So if you want something, if you want to buy a home, if you want a good bank balance, if you want to buy a car, we will structure the society in such a way that you will have to sweat day and night. Okay, and this is so extraordinarily convenient for the ruling class. इससे क्या होगा, जनता एस्पायरेशन में मरी रहेगी, दिन रात खून पसीना बहाते रहेंगे, and government के ruling class, that ruling elites can sit leisurely on the sidelines and watch all this drama unfold before them. ठीक है, तो this wraps up the passage. बहुत short है और narrative भी बहुत quickly हम sum up कर सकते हैं। Firstly, author is saying in the first half कि ideally speaking, in a capitalist society, useless jobs, pointless jobs should not exist. But defying all logic, paradoxically, they do. And a lot of those job roles, their terms and conditions, their effective employment rates, they bear a stark resemblance to old Soviet style system. ठीक है, and then he starts to talk about कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास जानती है, रूलिंग क्लास जानती है कि लोग फ्री नहीं होना चाहिए भाई, लोग खाली बैठेंगे तो तकलीफ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं नैरेटिव इज सोल्ड इन द सोसाइटी दैट बॉस लगे रहो, काम करते रहो, खून पसीना बहाते रहो, अदरवाइज सोसाइटी में तुम्हारी कोई कीमत डन। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट द पैसेज इज अबाउट। नो सॉरी, बाय बैड, पैसेज तो हो गया, क्वेश्चंस आर अबाउट क्वेश्चन 1। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू डज व्हाट, makes the author's assertion, author का opinion on pointless job erroneous. Good question। कि ऑथर का जो ओपिनियन है अबाउट पॉइंटलेस जॉब, उसको आपको वीकन करना है तगड़े तरीके से, अच्छे से डैमेज कर। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर अबाउट। इसके पहले आपके अंदर एक क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट डज द ऑथर थिंक अबाउट पॉइंटलेस जॉब, तो दैट इज गिवन ओवर हियर। ही सेज कि यार कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो होने ही नहीं चाहिए ऐसे जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सो बैड। ओके, this is a problem, this needs to be fixed, it should have been fixed by now,
but some strange magic is going on. It's as if somebody is magically creating this pointless job. And author का जो ये disapproval है, he is very direct about it. And हल्का सा यहाँ पे आप logic लगा के सोच सकते हो कि the author considers this pointless job as a big waste. ठीक है, ये इनके existence के वजह से people who are actually contributing to the society, to the economy, they get kicked out ना. People who are making, moving, fixing, maintaining things. यहाँ पे जो बात लिखी है कि unfortunately these guys bear the brunt whenever an unfortunate scenario happens. Okay, option A. और इस थॉट प्रोसेस को ऑथर के आपको तोड़ना है. ऑथर के दिमाग में कहीं ना कहीं इक्वेशन ये बना हुआ है that because of pointless jobs या फिर pointless jobs जो है they are a waste and they should be eliminated. It's a problem that needs to be solved. Okay, now you have to damage this opinion of the author. Let's see options. A. Pointless jobs decrease the efficiency of organization since they replace those who are actually contributing. This is bang in line with the author. ये support कर रहा है भाई author को. Strengthening his opinion can't be the answer. Out. B. Workers who carry out pointless jobs, they are more loyal to the organization compared to actual other people. This is completely tangential to the discussion. ये ना support कर रहा है author को, ना damage कर रहा है. Loyalty is nowhere the focus of the author. His focus is net positive contribution to the economy, net positive contribution to the organization. Case closed. Okay. So B is very tangential. It is not weakening his stand. C. Pointless jobs, they add less value compared to jobs जहाँ पे actually creation हो रहा है, making and fixing things. This is also very similar to option A. This supports the author's contention, hence out. ऑथर का तो बोलना ही है ना, जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए. दे आर ऑफ मोर यूज टू द सोसाइटी. और ए और सी आर इन द सेम लाइन, तो not the answer. D. Even though the rate of increase in pointless jobs is higher, लेकिन उनका जो absolute total count है, that is still lower than that of meaningful jobs. Still, what does option D say? Pointless jobs are less in number compared to meaningful jobs. ओके, होगा ना, होगा, चलो कोई बात नहीं, भले ही कम हो, लेकिन ऑथर का बोलना है कि ये है ही क्यों, और ये तो बढ़े जा रहे हैं डे बाय डे. ही इज अगास्ट, ही इज सैड अबाउट दिस 2 points कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जॉब शुड नॉट एग्जिस्ट. अब है तो है, बढ़ भी रहे संख्या में. ऑप्शन डी इज लाइक नहीं ना यार, फिर भी तो कमी तो है रेगुलर जॉब्स के, मीनिंगफुल जॉब्स के मुकाबले. भाई पागल हो गया है तो ऑथर बोलेगा उसको. ठीक है, so option D is not weakening the author's point. Author is very straightforward when he says कि यार ये this roles, this pointless job should go. Okay, so D is not doing anything for the author nor doing anything for the question. Naturally, answer option becomes E. क्या कहते हैं कि भाई जहां पर pointless job ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा है. ओ माय गॉड, दिस इज ये अगर सुन लिया ऑथर ने, ये अगर हकीकत में सच में देख लिया, इफ ट्रू, पागल हो जाएगा, भाग जाएगा ऑथर सीधा. ही विल जंप फ्रॉम द 10th floor. ओके, दिस इज हेविली वीकनिंग एंड ऑथर विल बी लाइक भाई RIP लॉजिक, RIP मी. ठीक है, जितने ज्यादा पॉइंटलेस जाओ उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है. डज नॉट मेक सेंस. ओके, so I hope that you got the answer to this question correct. If any doubt, let me know in the comment section. Also, please hit the like, share and subscribe buttons ASAP and support poor fellow humble guys like me. ठीक है, चलो. Meanwhile, I also hope that his XAT prep is going on well. Let's see what the second question is. Question 2. Which of the following can be best inferred from the passage? ठीक है, 2-3 बातें हम infer कर सकते हैं. Author is not happy with pointless jobs. He would like to see them removed. Author is also not very supportive of this idea of government कि लगा के रखो लोगों को काम में. ठीक है, भले ही जॉब कैसा भी हो पर काम में लगे रहने चाहिए भाई. लोग खाली बैठे कि हमको तकलीफ है. ओके, तो ऐसे 2-3 ओपिनियंस के सराउंडिंग कौन से बैठता है ऑप्शन हमारे लाइन में. लेट्स सी. ए. कीपिंग पीपल एम्प्लॉयड फॉर लॉन्गर आवर्स serves the plan of the ruling class. Definitely this is given in the last para, closing lines इसी के ऊपर में है, so this is correct. Okay, so is it the answer? Let's see. B. The ruling class abhors pleasure. अरे बढ़िया, abhors मतलब detest, नफरत है, दूर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं. They hate leisure so much that they encourage organization to create unwanted job. Heavy distortions है यार यहाँ पे, तो कहीं पर भी it is not implied कि रूलिंग क्लास इज पुशिंग द ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंशनली कि नहीं बनाओ और यूजलेस जॉब्स क्रिएट करो. ऐसा नहीं दिया.
It is desirable for the ruling class that there are pointless jobs present in the economy and people are tied up, lost in those. This is desirable for them. But are they actually going out in the world out there and creating those directly? Nowhere, nowhere, nowhere mentioned. ठीक है, so B में बहुत ज़्यादा ही guarantees दी गई है, बहुत ज़्यादा ही deterministic statement है. We should not be okay with it. Also, the language is way too bad. Abhors is a very negative word. ठीक है, out. C. Pointless jobs are here to stay, regardless of whether they are necessary or not. मुझे ये ऑप्शन ठीक लगा, सही बताओ क्या? अगर आपके साथ में ऑनेस्ट रहो तो ऑप्शन ए और सी इज वेयर आई लॉस्ट माय मार्क्स. ओके, कि यार इसमें से भी रिजेक्ट कैसे करूं और सही कौन सा बनाऊं, कुछ नहीं समझ रहा था. क्योंकि सी, हाउ कैन आई थ्रो माय वेट बिहाइंड सी. It's on the basis of what is narrated by the author over here in this case. कि है ना, सच में author is saying कि some kind of magic is happening, some strange alchemy is happening, और this is a problem capitalism was supposed to fix, but they have not been able to do it. Rather, the problem is exacerbating by the day. So कहीं ना कहीं from this I inferred कि potentially this is the situation, and also the ruling class tacitly supports this. ये भी बात हमें बोली गई है in the closing remarks. तो कहीं ना कहीं combining this 2-3 facts, I thought कि यार option C is also fair enough inference कि हाँ भाई, इकोनॉमी में पॉइंटलेस जॉब्स तो रहने ही वाले हैं, फिर भले वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो या कम्युनिस्ट हो. तो फॉर मी गॉट लॉस्ट इन बोथ ए एंड सी. डी एंड ई को चलो हम बहुत सेफली रिजेक्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी इजीली, क्योंकि ई में क्या गलती है? वर्क एज अ मॉरल राइट इज द डिजाइन ऑफ द रूलिंग क्लास. नो, दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज अ मॉरल ड्यूटी. ये काम करो, अगर नहीं करते हो तो तुम कुछ डिजर्व नहीं करते समाज. इट्स नॉट अ राइट, इट्स अ ड्यूटी. ठीक है. एंड डी के अंदर तो वंस अगेन काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन, काफी ज्यादा मनमानी वाली चीजें कुकअप कर दी गई, जस्ट लाइक इन ऑप्शन बी. यार ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को एम्प्लॉय करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस. अरे ये कहा दिया है कि लोगों को मीनिंगलेसली एम्प्लॉय करके रखा है? नोवेयर, नोवेयर एम्प्लॉयड. तो डी एंड ई गेट शोन द डोर. अब रहती है समस्या हमारी कि इसमें सही आंसर कौन सा है. तो आई विल कंसीड आई गॉट इट रॉन्ग एक्चुअली. आंसर ऑप्शन ए इज गिवन एज द ऑफिशियली करेक्ट आंसर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई चेक विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, could not find a satisfactory answer for rejecting option C. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑप्शन एक्सप्लेनेशन यही दिया गया कि बाकी सारे ऑप्शंस कहीं पे दिए ही नहीं है पैसेज में, हम इन्फर नहीं कर सकते. वाह, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है बॉस, प्लीज प्लीज नोबल दिया जाए ये एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इडियट्स. एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ ए एंड सी आर लेजिट ओवर हियर. अब आप कौन सा मार्क करते हैं ये तो अब आपको ही देखना होगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. आई एम स्टिल नॉट क्लियर कि सी को रिजेक्ट क्यों किया जाए. इफ यू हैव अ वेरी सॉलिड ओपिनियन ऑन योर एंड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पैसेज. ठीक है, क्या बोला गया है? Which of the following will best explain the principle underlying the theme of the passage? क्या बढ़िया है, the main idea question. ठीक है, कैट में बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस, जैट में थोड़ा सा रेयर है. मेन आइडिया क्वेश्चंस. ठीक है, तो सम आइडिया, सम सेंटेंस व्हिच स्पैन्स द आइडिया ऑफ द एंटायर पैसेज. ठीक है, you cannot cherry pick from any part of the given write up and say हाँ हाँ ये सेंटेंस याद दिया है, चलो ये आंसर बन सकता है. नो, the answer option should reflect the entire theme. Okay, you cannot be partial, you cannot be selective in your scope. A, work is a moral value in itself. Okay, now this statement is mentioned over here in the closing remarks. यहाँ पे कि this is an attitude, this is a narrative which the ruling class is peddling in society, but once again that is just a fragment of whatever is narrated in the passage. That this option A completely misses what is given over there in the first half of the narrative. कि pointless jobs exist करते हैं इकोनॉमी में और वो क्यों कर रहे हैं, according to the author they should not exist. All that part is completely missed. So for that reason option A, bye bye. Okay, coming to option B, organizations that create more jobs, they are rewarded by the government for protecting political value. वो मीम आया ना अभी, आई शुड हैव इंसर्टेड इट. यार क्या हो गया, मेरा मीम गेम बड़ा खराब हो गया. वो आया है ना अभी, आए. ओके, ये वैसा वाला एक्सप्रेशन आया था मेरे चेहरे पे पढ़ने के बाद. सी, people unwilling to submit to an intense work discipline deserve nothing.
Okay, just like option A, this is once again mentioned in the closing remark of the passage, but failed to capture the overall theme that is going on. Very selective cherry picking of whatever is given to us. इसलिए नहीं बनेगा. Although they are true, A and C they are true, लेकिन no, they are not good candidates for main idea question. D. Keynes predicted a happy and productive workforce is a force for the good. ये भी once again आए कहा दिया है ये nowhere given. केन्स ने तो बस इतना सा प्रेडिक्ट किया है कि लोग भले ही 50-100 घंटा दिखा रहे हो, effectively they are employed only for 15 hours a week. That's it. Yes, this is nowhere mentioned. But naturally, answer option is actually a very well-rounded statement in E. पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी रिक्वायर्स व्हाट. ह्यूमंस को ना यार कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगे रहना होगा. भले ही अब आपका काम मीनिंगफुल है, जॉब या मीनिंगलेस है, इसको आप नहीं सोच सकते, ज्यादा इस पे लड़ाई नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ काम में आपको लगे रहना होगा ताकि ग्रेटर गुड इन सोसाइटी इज मेंटेन्ड, पीस एंड ऑर्डर. ओके, एंड वेयर डू वी इन्फर दैट फ्रॉम? तो नैरेटिव ही तो पूरा उसके अराउंड है कि पॉइंटलेस जॉब, व्हाई डू दे एग्जिस्ट, व्हाई हैव दे नॉट बीन रूटेड आउट, एंड इट इज गिवन टू अस दैट the political class is implicit in uh, giving their tacit approval to such jobs. They are also a part of the problem because they believe that people with free time on their hand, they are going to be a danger to society. तो इसीलिए एक सोसाइटी का फैब्रिक मेंटेन करने के लिए लगाए रखो लोगों को काम में, फिर भले ही उनके जॉब्स में कोई दम वाली बात है या नहीं, डजेंट मैटर. ठीक है. So with this, we can go ahead and select option E as the answer. I hope that you got all the 3 questions correct. Let me know your score in the comment section. If you like the content, please hit the like, share, and subscribe buttons. All the very best with your prep once again, and I'll see you in the next one. Tata, bye-bye, and take care.